Our next topic is the second part of damp oscillation. After the general discussion and the types of damp oscillation, that is light damping, heavy damping, and critical damping, there are certain terms which to be defined, in which number one is logarithmic decrement. So the general equation of damp vibration of a body is given by x is equal to c e to the power minus kt sine omega t plus delta. Assuming that the body is set to oscillation by imparting suddenly a velocity in the position of rest, then we have delta is equal to phase difference. Phase is delta is equal to 0. So this equation will becomes this equation will becomes x is equal to c e to the power minus kt sine omega t. The amplitude of the vibration at time t, this is the amplitude term. So amplitude is c e to the power minus kt. So let a1, a2, a3, a4 are the successive amplitudes as shown in the previous diagram. So a1 is equal to c e to the power minus k t to the power 4. a2 is equal to c e to the power minus k 3t divided by 4. a3 is equal to c e to the power minus k 5t divided by 4. So we can calculate all the terms like this. Now, how these terms are coming? So let first डायग्राम हमारा क्या है उसको हम लोग देखते हैं. So the diagram is here. The terms are A1, A2, A3, A4 and A5. So these terms are used in the logarithmic decrement term having the period of t by 4. So we have we have the terms A1, A2, A3, an minus 1, an. So if we divide two consecutive terms a1 divided by a2, a3 divided by a4, a1 divided by a2, a2 divided by a3, a3 divided by a4, we get a constant term. This constant term is e to the power minus kt divided by 2, dividing these two terms. If it is a constant of a system, this constant is called decrement or log of decrement is called logarithmic decrement lambda. Thus, logarithmic decrement is the log of ratio of two successive amplitudes. If we take this quantity, this constant is equal to d. So lambda is equal to taking the log of this quantity. So lambda is equal to log e d, and d is equal to e to the power minus kt divided by 2. So this quantity will becomes kt by 2, as we know that log e having base e is equal to 1. So this is kt divided by 2. Sometimes logarithmic decrement is also defined as the log of the ratio of two alternate amplitude of oscillation, that is amplitude separated by one period. In such case, a1 divided by a3, a3 divided by a5, this quantity is equal to e to the power minus kt divided by t, and this value is kt, not kt by 2, this is kt. a1 divided by a3 मतलब a2 के टर्म्स को छोड़ दें, देन a3 डिवाइड बाय a4 के टर्म्स को छोड़ दें. मतलब क्या है, अल्टरनेट एम्पलीट्यूड्स का जो ऑक्सीलेशंस हो गए उसके डिवीजन को रेशियो का वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है. ये हमारा
इस क्वांटिटी से लॉगरिथम डिक्रीमेंट से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। This term is used to differentiate between light and heavy damping, and so it is called defined as the maximum value of restoring force to maximum of damping force. It is the ratio. So first we have to calculate these two terms. The greater the quality factor, the greater is its closeness to the ideal state of free vibration. जितना क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा वो आइडियल कंडीशन होगा फोर्स डैम वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन की क्लोजनेस के, मतलब उसके जैसा वो बिहेव करना शुरू करेगा। सो मान लेते हैं लेट द पीक वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ए इंटू कैपिटल ए, where A is the restoring force per unit displacement of the system and capital A is the amplitude of vibration of the system. But by virtue of standard substitution in the equation of damped vibration, small a is equal to mu square m naught. Now, as we know that mu is equal to omega naught, so omega naught square m. The peak value of the restoring force is m naught omega square a. The peak value of damping force is equal to b into velocity. So dx by dt, maximum value of velocity, where b is equal to damping force per unit velocity. But we know that dx by dt is equal to omega naught a, and by virtue of standard substitution in the equation of damped vibration, b is equal to 2 m naught k. So if we multiply these two terms, we get the peak value of damping force is equal to 2 m naught k into omega naught k. So quality factor, as we define, quality factor is the ratio of maximum value of restoring force to the maximum value of damping force. So maximum value of restoring force we have calculated is m naught omega naught square a, and the maximum value of damping force is 2 m naught k omega naught a. दोनों टर्म को डिफाइन रेशियो में लेने के बाद इक्वल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा मेरे पास टर्म ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2k. During a quarter cycle, that means 1 by 4, the body travels a distance equal to the amplitude, and so the frictional force will goes work given by W is equal to average value of frictional force into amplitude. So the average value of the frictional force is equal to 2 m naught omega naught ka, 2 m naught omega naught ka. This is the damping force. चूंकि इसका हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, शुरुआत में ये 0 था शुरू का वैल्यू, देन लास्ट का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एवरेज वैल्यू हो गया, और एम्पलीट्यूड मेरा ए है। सो यहाँ पे W हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, m नॉट ओमेगा नॉट के ए स्क्वायर. So E divided by W. What is E? E is kinetic energy, half m naught omega naught k a square divided by W, m naught a k a square. We get omega naught 2k. This is also equal to what? Quality factor. So the quality factor of a oscillating system may also be defined as the total energy to the energy dissipated due to the friction over the quarter of the period. Energy divided by the, this is work done. So next is relaxation time. The general equation of damped vibration is given by this. Velocity is equal to, if we calculate velocity यहाँ से फाइंड करेंगे तो velocity का टर्म यही आएगा कुछ डिफरेंशिएट करने पे. Assuming that the body is excited by the imparting velocity v naught suddenly in the mean position. So initial condition use करेंगे हम लोग. At t is equal to 0, x is equal to 0 and v is equal to v naught. Therefore we have delta is equal to. So
By virtue of first condition, the first condition is at t is equal to 0, x is equal to 0, we have c is equal to v naught omega by the virtue of second condition equation. So x is equal to v naught by omega, फर्स्ट कंडीशन है t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन को पुट करने से हमारा आएगा x, c के जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे, c के जगह पे इस c के वाले टर्म के जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे v नॉट बाई ओमेगा. तो वी नॉट बाई ओमेगा ई टू द पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी. मतलब जब फर्स्ट कंडीशन हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पुट करके देखते हैं तो ये टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 सिर्फ इस टर्म से रह जाएगा सेकेंड कंडीशन से. तो सी का वैल्यू आएगा वी नॉट, वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू वी नॉट है. सो हमारा ये वैल्यू. नेक्स्ट वी जो है v इज इक्वल टू वेलोसिटी है, ये v इज इक्वल टू वी नॉट है. इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, इस कंडीशन को यूज़ करने से हमारा ये टर्म आएगा, नेग्लेक्टिंग द सेकेंड बिकॉज k इज़ वेरी स्मॉल. इस सेकेंड टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए. सो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी, potential energy, where A is the restoring force per unit displacement and m naught is the mass of the body. Now by virtue of standard substitution in the equation of damp vibration, we have A is equal to mu square m naught, और mu का वैल्यू है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर m naught. सो E हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करने के बाद V का वैल्यू पुट कर देंगे, V का वैल्यू हमारा आया हुआ है ये, और उसके बाद ए का वैल्यू. तो पुट करने से हमारा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा. सिंस डैम्पिंग इज स्मॉल, सो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 1. सो we have the condition half m naught v naught square e to the power minus 2 kt cos square omega t plus half m naught v naught square e to the power minus 2 kt साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, ये कंडीशन आया हमारा यहाँ पे. नेक्स्ट दोनों में कॉमन टर्म को हम लोग क्या है, हाफ एम नॉट वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 के टी. सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1. सो कैपिटल ई इज इक्वल टू हाफ एम नॉट वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर minus 2 kt. Let E naught be the initial energy, then E is equal to E naught at t is equal to 0. So here E is equal to E naught half m naught v naught square. Since t is equal to 0, so e to the power 0 is equal to 1. So we can write here half m naught v naught square की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ E naught, चूँकि E naught का वैल्यू इतना आया है. So E is equal to E naught e to the power minus 2 kt. Thus it is seen that the energy of the oscillating body damped silently decreases exponentially with time. Let us put t is equal to 1 by 2k. Then E is equal to E naught e to the power minus 1. अगर यहाँ पे हम लोग 2k पुट कर दे, 2k कैंसिल हो जाएगा t के जगह पे, so बचेगा minus 1. So E is equal to E naught divided by E. So when the time is equal to 1 by 2k, represent the interval in which the energy of the system decay to, energy कितना decay कर जा रहा है, 1 by e times of its initial energy. This time is called relaxation time, tau of the system. Thus relaxation time of a system is the time in which its energy falls to 1 by e. e का वैल्यू जो हमारा होता है 2.73, वैल्यू पुट करेंगे तो ये 37 डिग्री परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू आएगा. सो E इज इक्वल टू E नॉट e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ, वेयर टाउ इज 1 by 2k. Now relation between quality factor and relaxation time is very important, as we know that Q is equal to omega naught divided by 2k and tau is equal to 1 by 2k. दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आएगा Q is equal to ओमेगा नॉट 1 by k की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे टाउ. तो सो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू
साइक्लिक फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा नॉट इनटू रिलैक्सेशन टाइम, क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में ये रिलेशन होता है।